Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session and आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और आज के सेशन के अंदर अगेन मैं आप लोग को एक पूरा पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा. This is May-June 2021, a very recent paper. 2210. The variant is different. In the last session we solved 1-1 and आज हम लोग जो solve करेंगे that is 1-2. पहले I was thinking that I should be going with October-November 2020. But when I look at this paper, थोड़ा सा ये variant different था. अच्छे सवाल आए हैं काफी इस variant के अंदर. So I thought that first we need to complete this variant as well. और फिर हम लोग अगले week के अंदर हम 2020 के सारे variants complete कर लेंगे. ठीक है? Along with March का भी आप लोग का एक पेपर होता है. तो March 2022 का भी पेपर हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे. So start करते हैं बच्चों. I will be solving this paper. Starting with question number 1. These are the binary values that are being given. We need to convert them into hexadecimal and binary as well. So 6 marks examiner award कर रहे हैं हमें. So 49 is the first number. मैं 49 नहीं लिखता यहाँ पे. Let me write 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. Now I need to make 49 first. So 32 plus 16. So that will be 48 plus 1, 49. The remaining bits will be set to 0. So this is the binary for 49. And oops, sorry. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Now moving forward, अब हमें इसका हेक्साडेसिमल भी कैलकुलेट करना है. So starting from the right hand side, जनरली बच्चे मिस्टेक ये करते हैं. They start from left hand side. No, that's wrong. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेगा. 4-4 बिट्स के पेयर बना लें. और हर पेयर के नीचे आप लोगों को पता है एक सीक्वेंस होता है हमारे पास, दैट इज 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. So this will become 3. ये आपका 3 बन गया. And this will be 1. So 31 will be the hexadecimal value for this. Now I need to make 123. So 64 plus 32, that is 96, plus 16. So that will be 112. 112 के अंदर मैंने 8 भी ऐड कर दिया. 120. 120 के अंदर मैंने 2 और 1 ऐड करा. Remaining bits will be set to 0. So this is the pattern for 123.
नाउ अब इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दें, 4 बिट्स पेयर एंड 4 बिट्स पेयर, एंड हर पेयर के नीचे आप लोग को पता है 1 2 4 8, 1 2 4 8. So this will become 7 and this will become 11. 8 plus 2 plus 1 and 11 बच्चों क्या होता है, that is equal to B. So 3B, sorry, 7B will be the right answer. और इसका बाइनरी भी आप लोग प्लेस कर दें, so 0 1 1 1 1 0 1 1. Now the last value बच्चों is 200. So 200 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So 128 plus 64, so that will be 192. 192 plus 8, so that will be 200. Now the remaining bits will be set to 0, and this is the binary for 200. Then you were asking कि 7B कैसे आया, तो ये देखो ऐसे देख लो, मैंने यहाँ पे 4 बिट का पेयर बनाया, दिस इज द फर्स्ट 4 बिट पेयर, और मैंने एक और 4 बिट का पेयर बना दिया. हर पेयर के नीचे मैंने लिखा एक सीक्वेंस 1 2 4 8 1 2 4 8. अब जहां जहां 1 है सिर्फ उनको ऐड कर लो, तो 8 प्लस 4 दैट इज 12. तो 12 क्या होता है, 12 होता है हमारे पास C, और यहाँ पे कहा है सिर्फ 8 के ऊपर 1 है, तो 8 8 ही रहेगा, तो दिस विल बिकम C8. सिमिलरली 7 भी कैसे बना था, 4 प्लस 2 प्लस 1 7, 8 प्लस 2 प्लस 1 11, और 11 क्या होता है हमारे पास, B होता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड दैट स्टफ. और 1 1 0 0 1 0 0 0. तो बच्चों एग्जामिनर इज अवार्डिंग यू 6 मार्क्स फॉर दिस कैलकुलेशन. अच्छा जी, अगले पार्ट में बोलना है गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ यूजर्स कन्वर्टिंग बाइनरी वैल्यूज इनटू हेक्साडेसिमल वैल्यूज. अब देखिए जर्नली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं कि स्मॉलर इन साइज हो जाते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, साइज सेम रहेगा. फायदा क्या होता है आपके पास, इजियर टू रीड, रीडिंग के अंदर बच्चों आसानी हो जाती है आपको. ठीक है, तो मैंने यहां पे बता दिया easier to read, write and understand. Further you can say easy to detect errors. So these are the 2 benefits that you can write over here. फातिमा भी आपको जवाब देता हूं मैं. फातिमा ने एक बच्चों सवाल किया है, शी इज आस्किंग कि सर कैन वी ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम विद पेंसिल एंड लीव एज इट इज. यस वी कैन, बट मेक श्योर कि थोड़ा डार्क पेंसिल आपने यूज करी हो. ये ना हो कि बहुत ही लाइट पेंसिल यूज करके आप उसको लीव कर दें वैसे ही, और जब स्कैनिंग हो आपके पेपर की तो वो डायग्राम एग्जामिनर को नजर ही ना आ रही हो. तो अगर उसको डायग्राम नजर नहीं आएगी तो ही वोंट बी अवॉर्डिंग यू मार्क्स. ठीक है, तो जस्ट ये मेक श्योर कर लेगा. हेक्साडेसिमल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट HTML, hypertext markup language color code in computer science. Identify 3 other ways that hexadecimal is used in computer science. So bachcho, there are many things that you can write. MAC address, they are used in memory dumps,
They are used in assembly language. So I think these are enough. Moving forward. और इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है. Moving to question number 2. Okay, there are 6 statements about the data storage that we have. और आप लोगों को यहाँ पे टिक लगाना है बच्चों. No moving part. So मैग्नेटिक के अंदर भी मूविंग पार्ट होता है, ऑप्टिकल के अंदर भी मूविंग पार्ट होता है. सॉलिड स्टेट में वी डोंट हैव एनी मूविंग पार्ट. पिट्स एंड लैंड्स. तो बच्चों सीडीज के अंदर पिट्स एंड लैंड्स होते हैं हमारे पास. ऑप्टिकल डाटा इज स्टोर्ड ऑन प्लेटर्स. सो प्लेटर्स हम लोग कहां पे यूज करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर. दैट इज मैग्नेटिक. फ्लैश मेमोरी, so that is solid state. Parts are rotated to store data. So I think both data can be stored permanently. So in all devices, data can be stored permanently. 6 marks. Give one example of magnetic storage. So that is hard disk drive. Give one example of optical storage. So that is CD-ROM, DVD. So मुझे ब्लू-रे भी पसंद है वैसे तो. So we can write DVD, ब्लू-रे, CD-ROM. योर कॉल, आपकी मर्जी है, कोई भी एक आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन. सर अगर लास्ट लाइन में हमने एक टिक लगाया तो दैट विल बी राइट और रॉन्ग. तो बच्चों 1 नंबर आपका एग्जामिनर माइनस करेगा इस बात के ऊपर. अगर आप तीनों ऑप्शंस के अंदर टिक नहीं लगाते, आप सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो एग्जामिनर 1 नंबर माइनस करेगा. सो मेक श्योर कि सारे ऑप्शन राइट ऑप्शंस आर बीइंग सिलेक्टेड. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, 3 marks. Identify which type of storage would be the most suitable for the use in a web server and justify your choice. So I will be going with hard disk drive. So the reasons that I will be justifying over here will be बच्चों, cheaper in price, longevity. I hope you people remember, data can be stored for longer period of time without errors. After longevity, another reason that you can write, magnetic storage has more density. Density का मतलब more amount of data can be stored in a given place. So इसकी डेंसिटी भी बच्चों क्या होती है आपके पास? ज्यादा होती है. So longevity, less chances of error, reliable
tested and used by many industries. So these are the justifications that you are going to write बच्चों over here. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. अच्छा, अगर आप लोग सॉलिड स्टेट भी लिख देते हैं तो उसको जस्टिफाई करना होगा आपने कि नो मूविंग पार्ट, रिलायबल, एडवांस टेक्नोलॉजी. तो उसकी फिर आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी. तो योर कॉल, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. डिस्क्राइब द ऑपरेशन यूज्ड इन यूएसबी flash memory and how it stores data. So the technology that is used is NAND technology. Of course we use we know. तो मैंने पहली बात तो यहाँ पे लिख दी, uses NAND technology to store data. Transistors millions of transistors are used to control the flow of electrons, that is zeros and ones. You can also write data stored in a transistor is directly stored in binary form. And another thing that you can write, USBs के अंदर generally write and read operations is performed sequentially, मतलब line by line. Although this statement is not very common that you can write, but still अगर आप लोग चाहें तो you can write this statement over here. So a good question, question number 2 was a good one. अच्छा लगा मुझे सवाल. Let's move forward. Sure beta, I will be sending this PDF on the WhatsApp group as well. अच्छा जी, logic gates, although this is a very easy question, I think ये last class वाला जैसे ही question है, so I won't be wasting much time. लॉजिक गेट्स ब्रैकेट बाय ब्रैकेट चला करें. सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट बना रहा हूं, नॉट ए एंड बी. ए के आगे लगाना है नॉट, और दोनों ए और बी को क्या करना है, एंड. सो मैंने लगाया ए के आगे नॉट, और इन दोनों को कर दिया मैंने एंड. डन फर्स्ट पार्ट. अब इसका जो रिजल्ट है वो सी के साथ क्या हो रहा है बच्चों, और हो रहा है. सो ये रहा सी,
और कर दिया मैंने, काफी बड़ा गेट बन गया, चलो खैर है। अब जो इसका रिजल्ट है वो बी के साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो दिस इज बी। अब बी और सी बच्चों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी, और हो रहे हैं। तो दिस इज बी, दिस इज सी, थोड़ा नीचे कर देते हैं इन्हें, दिस इज बी, सी भी मैंने यहीं से ले लिया, एंड ये दोनों क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। एंड फाइनली ये पूरा जो दोनों के रिजल्ट हो रहे हैं, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में क्या हो रहा है, नॉर हो रहा है। काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों एक्स। तो एग्जामिनर वाज अवॉर्डिंग यू 6 marks फॉर दिस लॉजिक डायग्राम। अच्छा सवाल था। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वो बोल रहे हैं ऊपर जो स्टेटमेंट है उसका ट्रुथ टेबल बनाना है आप लोगों ने। उफ, ट्रुथ टेबल सॉल्व करना, इट विल बी अ रियल हैक। खैर करना तो है, तो लेट्स सॉल्व। तो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाना है बच्चों। वही फॉर्मूला रखेंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है भाई। सो सबसे पहले मैं नॉट निकालता हूं, आप लोग को पता है सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक ही नॉट है, दैट इज ए नॉट। सो लेट मी कैलकुलेट ए नॉट। नॉट क्या होता है, अपोजिट, सो दिस विल बिकम 1 1 1 1 0 0 0 0। अब सबसे पहले मैंने बच्चों यहाँ पे इस स्टेटमेंट को 1 का नंबर दे दिया, मैंने इसको 1 का नाम दे दिया 1। तो मैंने 1 कैलकुलेट कर लिया। ए नॉट, दिस इज ए नॉट, और बी क्या हो रहे हैं, दे आर बीइंग एंड। तो एंड कर दे इसे, 0 0 1 1 0 0 0 0। नाउ 1 सी के साथ क्या हो रहा है, इट्स बीइंग ऑड। सो दिस इज 2, दिस इज सी, एंड दिस इज 1। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। कर दें और, 0 1 1 1 0 1 0 1। नाउ द रिजल्ट इज बीइंग एंड विद बी। ये जो 2 रिजल्ट है मेरे पास, ये बी के साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। सो वी हैव बी ओवर हियर, ये रहा 2, ये रहा बी, दोनों को एंड करना है। और मैंने इस रिजल्ट को नाम दिया, दे दिया लेट्स से 3। सो बी एंड हो रहा है सी के साथ। सो दिस इज बी, दिस इज 2। सो 0 0 1 1 0 0 0 1। नाउ इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों 4। सो बी और सी हो रहे हैं हमारे पास, दैट इज 4। सो दिस इज बी, दिस इज सी, और करना है 0 1 1 1 0 1 1 1। नाउ 3 और 4 क्या हो रहे हैं, नॉर हो रहे हैं। नॉर के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास एक वैल्यू भी, नॉर के अंदर क्या होता है, इफ वी आर हैविंग वन वैल्यू एज 1, द रिजल्ट विल बी 0।
कोई एक वैल्यू भी अगर 1 हो गई, रिजल्ट क्या होगा हमारा? 0 होगा। दैट इज नॉर गेट, अपोजिट ऑफ और गेट। और के अंदर क्या होता है, अगर एक वैल्यू भी 1 है, रिजल्ट विल बी 1। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू भी 1 है, रिजल्ट विल बी 0। ठीक है भाई। सो इसको मैंने नाम दे दिया x, और मैंने x कैलकुलेट करा। अब so we have 3, we have 4, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0. So this is the final result that we have. अब बच्चों, you need to compare this x that you obtained with the x जो एग्जामिनर ने कैलकुलेट किया हुआ था, और आपको यहाँ पे 4 एरर्स आइडेंटिफाई करने। सो फर्स्ट रॉ में नो एरर, वी हैव एरर, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, देन वी हैव एरर यहाँ पर है, एंड वी हैव एन एरर ओवर हियर। सो रॉ नंबर 2 3 7 8, these are the 4 rows that are in error. तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2 3 7 and 8 are the rows that are in error. Now moving further forward, अच्छा सवाल था ये, let's see. This is question number 4. There are 6 statements about the security, internet security risks. You need to check कि ये virus है, spyware है, denial of service attack. Fine. So let's see the first one. Captures all data entered by a keyboard. So that is a spyware, of course. Can be installed onto web server. Virus can be installed, spyware can be installed. Denial of service service cannot be installed. Prevents access to a website. That is denial of service attack. Is malicious code on a computer. So both spyware and virus are the malicious code on a computer, self-replicating. So virus is a self-replicating stuff, not a spyware, not denial of service attack. Damages the files on a user's hard drive. So only virus can damage the files. Spyware खामोशी से बैठा रहता है, फाइल को ऑब्जर्व करता है, that's it. Identify 3 other types of internet security risk. So we have many issues in the internet world, like phishing, we have farming, we have hacking, we have war driving, we have cracking. So we have multiple, कोई भी 3 लिख देगा भाई. अच्छा जी, internet security risk can be malicious, damage data. Data can also damage accidentally. State 3 ways that data could be accidentally being damaged. So you can have a human error, गलती से आपने डिलीट कर दिया. You can have a hardware failure, hard disk जल गई, hardware failure. You can have a software failure. You can have आपकी बुक में लिखा हुआ था फ्लड, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ गया, natural disaster. You can have a power failure. For that you can deploy a UPS as well. Yes, Ukasha. We can have a power failure as well. So बच्चों, ये एक क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, एक अच्छा सवाल था. So you should know this stuff as well. Now let's move forward. क्वेश्चन नंबर 5 को अभी मैं होल्ड करूंगा बिकॉज वी डिड, हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था. यही आप लोग का टेम्परेचर, लाइट सेंसर,
motion sensor, and you need to repeat the same process कि microprocessor sensor sense करेगा. So हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया. So you can do this question by yourself. आ जाओ. Question number 6. Cookies can be used to store personal data, online browsing habits. Cookie could be used to automatically enter users' payment details when user makes a purchase online. Describe how cookies can be used to store and automatically enter users' payment detail. So you need to explain. बच्चों यहाँ पे आप लोगों को cookies को क्या करना है? Explain करना है in detail. So let's see. The first thing that you should remember about the cookies are sent by web server to web browser. Cookies are stored on users web browser. User payment details are encrypted and stored in a text file. When user revisit web page or website, web server can access that cookie file stored on user's computer. Web browser sends cookie file back to web server. Okay, explain why users may concern about their personal data and online browsing habits being stored in cookies. क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे यूजर? एक्सप्लेन व्हाई. ऊपर तो हमने एक्सप्लेन किया व्हाई यूजर्स मे बी कंसर्न about their personal data and online browsing habits being stored. हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, कोई हैक कर ले, कोई डिक्रिप्ट कर ले आपके डाटा को. So these are the concerns.
user can have privacy issues profile of user can be stored sensitive information of user can be stored. That's why he's concerned. Hackers can hack cookie files for sensitive data. So these are the बच्चों 4 reasons that you can write over here. Now moving further forward, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कितने हैं हमारे पास? Oops, that's the last question. Good. Jolini uses HTML to create a website. She separates the HTML into structure and presentation. Give one example of HTML structure. We have many. So HTML structure बच्चों क्या होता है आपके पास? Basic text, paragraph, image. You need to write only one. Margins, lines, padding. So these are the बच्चों examples of HTML structure. And if you talk about, give 2 examples of HTML presentation. So font size, font color, background color, image, border, so these are the बच्चों properties of presentation. Explain why Jolini separates the HTML into structure and presentation. So it should be easy for Jolene to edit the style of web page. She can add new content. She can
reuse the same template of style again. So these are the reasons that you are going to write. Now the last one, bachcho, a keyboard is a type of input device and used to enter the data into a computer. Complete the paragraph, bro. Not all items in the list should be used. A keyboard has a key matrix underneath the keys. When a key is pressed, it presses a dash. It presses. Binary, no. Breaks, no. Calculate, no. Character, it presses. When a key is pressed, it presses a character. अच्छा, और ऑप्शन देख लेते हैं. सर्किट, information, no. Network, no. Press, no. Process, no. When a key it presses a process, no. It presses तो वी हैव मल्टीपल आंसर्स. बच्चे काफी सारे आंसर कर रहे हैं. यस, तो जब बच्चों की प्रेस की जाती है तो इट प्रेसेस अ स्विच. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था. अगर मैं शायद करेक्टर भी कर देता. दैट कंप्लीट्स अ सर्किट. जब एक स्विच को आप प्रेस करेंगे, इट कैन बी अ करेक्टर बिकॉज कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास करेक्टर्स होते हैं. खैर चलें, एग्जामिनर आप लोग का स्विच बोल रहा है तो इट कंप्लीट्स अ सर्किट. दिस अलाउस डैश टू फ्लो. बाइनरी वैल्यूज फ्लो करती हैं, लेकिन बाइनरी टू फ्लो तो नहीं होगा. करंट, zeros and ones, voltage levels. So current to flow. The location of the key pressed is processed. Processed है हमारे पास. Processed. प्रोसेसर है तो नहीं. प्रेस नहीं. कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड का मतलब भी प्रोसेस्ड ही होगा. सो कैलकुलेटेड. The location of the key press is compared to a value. Compared to binary, no. Compared to breaks, no. Compared to character, yes. Keyboard में character होते हैं, it can be compared with a character or a value. Map to find the dash value. Of course, we need to find the binary value of the key that has been pressed. थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला सवाल, बिकॉज वोकेबलरी मुझे अच्छी नहीं लगी ज्यादा एग्जामिनर की. जस्टिफाई नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं हम, कंफ्यूजिंग वोकेबलरी एग्जामिनर ने यहाँ पे यूज करी है. आसान वोकेबलरी यूज करनी चाहिए थी. क्लैरिफाई होनी चाहिए चीज, लाइक करेक्टर एंड प्रोसेस्ड. सो खैर, एग्जामिनर है भाई, ही कैन डू एनीथिंग. तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वेरिएंट कंप्लीट होता है. आज इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करेंगे. अगली क्लास के अंदर अब मैं आप लोग को मई जून 2020 के पेपर सॉल्व करवाऊंगा अलॉन्ग विथ 96 बोल रहा हूं मैं आप लोग को, 0478, दैट इज आईजीसीएससी. तो आईजीसीएससी के अंदर मार्च के अंदर भी एग्जाम्स होते हैं. सो मार्च 2022 का पेपर भी मैं आप लोगों को क्लास के अंदर सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सिमिलर होता है बच्चों.
थोड़े से पैटर्न आपके पास सेम रखता है एग्जामिनर टू योर मई जून 2022। तो क्या पता कुछ वेट, कुछ थोड़ा सा चेंज हो पैटर्न के अंदर 22 के पेपर के अंदर, तो वो हम लोग वो पेपर भी जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, मैं आप लोग के मॉक के बारे में भी डिटेल्स बता दूं आप लोग को। नेक्स्ट वीक में आप लोग का मॉक भी कंडक्ट करूंगा। जो बच्चे ऑन कैंपस आगे देना चाहें तो वो ऑन कैंपस दे देंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहें तो वो ऑनलाइन मॉक अटेम्प्ट करेंगे। मैं डेट अभी आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में तो आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।